Hello and good morning and welcome back to another episode of the Midas Touch Wealth Foundation to Wealth Mastery Journey with Vikas Joshi. Friends, this is a complementary series to the other two series, that is the Money Mindset Mastery with Vikas Joshi and Golden Whispers, Vikas Joshi Inspires Aspirations. In those two series, we are dealing with the growth mindset, the change of mindset, from restricted mindset to the growth mindset, from financial accumulation to financial stability. Now, as we were addressing this part, after a period, it was felt that we should start a simultaneous series wherein we understand the financial concept and how to create wealth and how we move on to our wealth mastery. Our goal is financial stability. So we have to understand how we are going to reach that. And hence this series was started. In this series, we will be dealing only with finance, financial terms, the necessity part, how you plan your future for the finance, what are the basic things that are necessary that you should be aware of, minimum necessities that you should be aware of for creating a financial stability part. As you create your wealth, you will realize that the basics are so important, and when they are very clear, the creation of wealth is a faster part. You realize that the wealth creation has helped you not only to create your wealth but also understandingly create your wealth. मैं क्यों बता रहा हूँ? Because we have got a habit of being dependent of any other person. वो common है. Because one cannot be master in every field. I agree to that. But when it comes to finance, अरे पैसा आपका है तो आपको देखना ही पड़ेगा. यू कैनॉट जस्ट से आई एम रिलाइंग, उसने बोला तो मैंने कर दिया. नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करनी है. बिकॉज when it comes to finance, you should be aware. You may not be aware into the details of it, yet I will be trying to give them in this series because that is the important part. मैंने हमेशा कहा है, पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है, पर जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है. सो ये जरूरी चीज है. अगर जरूरी है तो हमको उसको पूरा जानकारी भी होना चाहिए. We cannot be master in all fields. I agree, exactly agree to every word of it. But when it comes to finance, when it comes to paisa, when it comes to money matters, you have to be aware because it is your hard-earned money that is at stake. अब अगर लॉस हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे? अरे मैंने तो उस पर भरोसा किया था. गलत. Because you cannot have that blind faith in finance. You should have a knowledgeable faith in finance. वो जो आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको बता रहा है, क्या आप समझ पा रहे हो? ये जरूरी है क्योंकि वो अपने एंगल से बता रहा है. बट व्हेन यू आर क्लियर विद द बेसिक कंसेप्ट्स, यू हैव योर ओन ओपिनियंस which may lead to a questioning part, a question answer series with the investment advisor. That will help you to gain more, not only in knowledge, but also in wealth. Because a knowledgeable decision is always beneficial than a blind decision. ब्लाइंड माने क्या? मैंने भरोसा रखा. क्यों रखा? आपने सुना ना, ये अभी अभी पेपर में भी आया था लास्ट वीक या लास्ट मंथ में. अ पर्सन CA, he defrauded many people to the tune of say some crores. And the people they were interviewed, they were telling in the interview, इसने बोला था तो उसने भी किया था, पास मैंने 6 महीना उसने इंटरेस्ट दिया था, सो मैंने भरोसा रखा, अपनी मैंने सारी पूंजी उस पर लगा दी. Where did those people go wrong, friends? They went wrong in the things that they didn't make themselves aware of the finance.
the necessary terms of finance, the repercussions of whatever they were doing. They were not aware because they didn't invest knowledge into their financial investments. And that is why I thought that it is a necessity. First of all, let us understand the financial terms. As we go further, as we go deep into wealth creation, we will be dealing with many of the things, how and where to invest in the later part of this series. But it is necessary that we have a sound base. We are all come from a very educated part, or one of we may be pursuing education. I agree to that. But that education part, when it comes to implementation part, there are certain things that we should make clear of. हमने एजुकेशन तो पा लिया क्योंकि हमारा गोल था कि मुझे नौकरी चाहिए, कॉर्पोरेट जॉब चाहिए, बिजनेस करना है, जो भी है. Then we appointed an investment advisor. He was looking after our finance. Or we appointed a financial advisor. Or we appointed a financial accountant who was looking after your finance. But you should be aware of your financial part. That is the necessity. Hence this effort, friends. And I wish and I also urge to every one of you, spare some time to make yourself aware of the basics of finance, and this series will help you just to make aware. We are not going deep into what awareness of the terms. We will be going deep into the investment of the part, and there I will be explaining why we are doing such things. So friends, today's topic will be, I have been dealing with all the parts of these financial terms, and as we proceed further, we have understood the inflation part, we have understood the daily living part. So we have to understand now the net worth part. हम पहले क्या व्यक्ति का देखते हैं, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, उसका नेटवर्थ कितना है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, उसके पास पैसा कितना है, वही तो हम जानना चाहते हैं. बिकॉज इन एवरी वे, कहीं भी हम जब भी आम तौर पे भी बातें करते हैं, नुक्कड़ पे खड़े रह के बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो हम बात क्या करते हैं, यार उसके पास इतना पैसा है, वो फ्रॉड आदमी नहीं है, हिज नेटवर्थ इज गुड. ओ, वी आर यूजिंग द टर्म. वेयर डिड यू गेट द टर्म नेटवर्थ फ्रॉम? इट इज अ टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज. ओह, ये तो कॉमर्स डेफिनेशन है, करेक्ट. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग. और वो चाय पीते हुए नुक्कड़ पे जो बात कर रहे थे, अरे वो बहुत पैसे वाला है, उसके पास बहुत पैसा है, या फिर उसके पास कितना पैसा है तेरे को पता है क्या, व्हाट इज हिज नेटवर्थ? हाँ, तो मैंने सोचा ही नहीं. फिर हम किसी और को पूछते हैं, अरे इसकी नेटवर्थ क्या, अरे बहुत अमीर आदमी है वो. खत्म, डायलॉग इज ओवर. वेयर आर वी गोइंग डियर फ्रेंड्स? दैट इज अ सुपरफिशियल टॉक, नुक्कड़ वाली बात हो गई. बट व्हेन इट कम्स टू आवर इन्वेस्टमेंट पार्ट, आवर करियर, आवर वेल्थ क्रिएशन, it is a necessity that we understand those loosely talked terms. net worth, total assets कितना है, total liabilities कितना है, लोन कितना लिया है उसने, पता है क्या तेरा सिबिल स्कोर क्या है, ये सब बातें होती है. बैंकर भी आमतौर से बात करता है. हाउ मेनी ऑफ अस have given importance to understand the things? Very few, because we are habituated to keeping faith on someone else. Yeah, at times we even boast, अरे मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो देख लेगा, मुझे देखने की जरूरत नहीं. अरे भाई तेरा पैसा है, वो फाइनेंशियल एडवाइजर है, तेरा पैसा है तो तेरे को बेसिक पता होना चाहिए. बाकी तो फाइनेंशियल एडवाइजर जो बोलेगा वो तुमको, डिसीजन तो तुमको लेना है ना. इफ यू आर मेकिंग एन अवेयर डिसीजन, you are a successful person.
if you are making a blind decision, you may be successful, may not be successful. In finance, you have to be specific. So you have to be aware. So as we were dealing with these terms, the net worth term becomes a prime importance, friends. Net worth. Before defining that, let me define the components, the total assets and total liabilities. Today we will be dealing with total assets. I wish that I make you aware what is the total assets in respect of wealth creation. Total assets आपको पता है, I know that. वी आर ऑल एजुकेटेड, या कोई परसू कर रहा है एजुकेशन, उनको सब बेसिक्स वो तो मिलेगा ही आपको, किसी किताब में देखोगे तो डेफिनेशन मिल जाएगा आपको. बट वेल्थ क्रिएशन के लिए हमको क्या सोचना है और क्यों इसका इंपॉर्टेंस है, दैट इज व्हाट वी विल बी डीलिंग विद टुडे एंड इन अवर नेक्स्ट सेशन आल्सो, वेयर इन वी विल बी डीलिंग विद इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डीलिंग व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ total assets, how it is generated. Now, if you are generating the assets, you are generating the worth, you are generating your net worth, you are enhancing your net worth, you are enhancing your financial stability. Arey haan, that is where we are reaching it. So, total assets play the critical role in wealth creation, serving as the foundation upon which you can build a business or your business can grow their financial stability and prosperity. Total assets are a crucial component of wealth creation, providing the foundation for basic stability, income generation and growth potential. अभी तक मैंने टोटल एसेट्स का मैंने डिफाइन तो कर दिया था, बट ये एंगल मैंने सोचा ही नहीं था कि व्हाट आर देयर यूटिलिटी फॉर. मैं बोस्ट तो करता हूं मेरी नेटवर्थ इतनी है, आई एम हैप्पी एंड आई एम हैविंग, मैं इतना रिच हूं, बट व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टोटल एसेट? ओह, वो तो मैंने सोचा ही नहीं था. That is what we are dealing with in wealth creation, friends. So, by strategically managing and leveraging the assets, you individuals and businesses can enhance their financial security, seize the investment opportunities, and build a lasting legacy. Understanding the necessity and effects of the total assets, it is essential for effective wealth creation and long-term financial successes. है ना? माने क्या कि जब मैं फाइनेंशियल एसेट क्रिएट कर रहा हूं तो मैं मेरे लिए सिक्योरिटी क्रिएट कर रहा हूं. मैं अपनी लीगेसी को क्या दूंगा, मैं अपने बच्चों को क्या दूंगा, तो मैंने क्रिएशन है. आमतौर पे आम घर में ये चर्चाएं होती है और आजकल कई घरों में ये बड़ा इशू भी है कि सीनियर सिटीजन्स ने अपनी सारी वेल्थ अपने बच्चों को दे दी तो बच्चों ने अपने सीनियर सिटीजन को ही बाहर निकाल दिया. Wealth creation, total assets given away blindly on faith. Creation जो था वो करना चाहिए था, legacy में देना ही है. Where? Now this part I will not intermingle with this basic part of total asset because that I will having a separate session on that. It is important and it is interesting also. So total assets are the sum of all owned resources that have economic value. That asset which can be turned into money. Economic value है तो total assets अच्छा है. अगर नहीं है तो वो asset है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है मुझे. Why? Because wealth creation, अरे हम प्रोसेस में ही वही है. वी वॉन्ट टू क्रिएट अवर वेल्थ, वी वॉन्ट टू गिव अवर लेगेसी टू अ पर्सन वेयर बाय ही विल बी अवेयर ऑफ व्हाट ही इज हैविंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस. मनी मैटर्स में होना है ना. नाउ दिस इंक्लूड्स कैश, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, इन्वेंटरी and any other resources that can be converted into cash or used to generate income. That is what I stated. इनकम जनरेशन होना चाहिए उस एसेट से. अगर एसेट्स इनकम जनरेट नहीं कर रहा है वो एसेट किसी काम का नहीं है मेरे लिए, बिकॉज आई एम नॉट क्रिएटिंग वेल्थ, आई एम मेकिंग एन एसेट बट आई एम नॉट क्रिएटिंग द वेल्थ. So that assets can be categorized into, classified into various categories such as current assets, cash,
अकाउंट्स रिसीवेबल्स एटसेट्रा, जहां पैसा आना है. Fixed assets, property, plant and machinery, equipment, etc. And intangible assets like patent and trademarks. हमारे बिजनेस में हम करते हैं ना, ट्रेडमार्क लगाया है. That is a sellable property. Now that will generate income for you. Now these assets, there is a necessity for total assets for wealth creation. They are the foundation for financial health. The stability, having a strong asset base provides financial stability. है अभी एसेट मेरे पास, अब दिमाग से वो स्ट्रेस तो निकल गया, बिकॉज आई कैन अवेल मेनी फैसिलिटीज टू गो फर्दर फॉर. एक कुशन है मेरे पास फॉर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. एसेट है मेरे पास, सो आई कैन हैव दैट कंफर्ट ऑफ फाइनेंस to proceed further for in any economic fluctuations that may happen in my life or in anybody's life. This stability is crucial for both individuals and businesses in navigating uncertainties and maintaining financial health. So assets, total assets, they play the crucial role in stability and mental health. दिमाग पर संतुलित रखेगा क्योंकि वो शांत रहेगा. चिंता मत कर, पैसा है. इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन जरूरी है जीने के लिए. So assets can be used as collateral for loans, enabling access to additional capital that can be invested, opportunity that drive further for wealth creation. अब बिजनेस करना है तो मुझे लोन लेना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट बैंक्स आर हियर फॉर. नाउ द बैंक्स ऑलवेज आस्क व्हाट आर द एसेट्स अवेलेबल दैट यू कैन गिव एज अ कोलैटरल फॉर योर लोन्स. तो एसेट है तो आई कैन ऑलवेज जंप इन फॉर द थिंग्स एंड आई कैन ऑलवेज आस्क फॉर दोस सो दैट आई कैन इन्वेस्ट मोर. दिमाग क्यों ऐसा है? क्योंकि अभी अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलना है तो अभी मिलना है. कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो मेरे को बिजनेस मिलेगा, बिजनेस मिलेगा तो मैं उसको रिटर्न करूंगा लोन, लेकिन उसके ऊपर मेरा जो है वो तो बचेगा ना मेरा. आई एम क्रिएटिंग दैट एसेट. सो द कोलैटरल एसेट्स व्हिच व्हाटएवर आई वाज हैविंग आई हैव गिवन टू द बैंक, दैट इज नाउ सेफ. प्लस आई हैव जनरेटेड इनकम एंड क्रिएटेड अ बिजनेस आउट ऑफ दैट. That is what. Now I have created a more assets. I have added my value to my total assets. Now this is helping me in income generation. जैसे कि आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल रहा है या उसका वैल्यूएशन हो गया, बढ़ गया स्टॉक, आपको पैसा मिल गया, इनकम जनरेट हो गया. व्हेन यू वर स्लीपिंग दे वर वर्किंग. मैंने अगर एक कबर्ड में रख दिया होता, वो मेरा एसेट ही है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है. कबर्ड के अंदर पैसा रखा, अरे उसकी वैल्यू है. हाँ रे, करेक्ट. सो वो जो पैसा है, वो जो स्टॉक रखा है, वो जो बॉन्ड्स रखे हैं, दे आर जनरेटिंग इनकम फॉर मी. नाउ दैट जनरेशन ऑफ इनकम इज एनहांसिंग माय टोटल एसेट्स. इन स्टेट डेवलपमेंट कर दी, स्टेट इन्वेस्टमेंट कर दिया, स्टेट के प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ गए, मेरी इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई. दैट वॉज क्रिएटेड, दैट वॉज जनरेटिंग इनकम दो आई वॉज स्लीपिंग. नाउ दिस विल हेल्प फॉर बिजनेस एसेट्स में. जैसे कि अभी बिजनेस कर रहा हूं तो प्रॉपर्टी मैंने मॉर्गेज कर दी, उसके ऊपर मैंने लोन लिया, फिर से मैंने बिजनेस में डाल दिया, बॉन्ड्स ले लिए, शेयर मार्केट में डाल दिया, जो भी है. आई एम ट्राइंग टू हैव दैट पैसिव इनकम गोइंग ऑन. Because I wish to generate income. I'm not only wishing, I'm also generating my assets. So also I'm enhancing the value of my assets. तो total assets बढ़ रहे, in turn मेरी net worth बढ़ रही है. So loan लिया ना, हाँ, that will be deducted. Net worth बढ़ रही है, that is what I stated. Total assets minus total liabilities and net worth. Now when I'm enhancing my total assets, the assets are more, the net worth will be more. Because the loan that I have taken are for limited period, that I will be repaying from the generation of my income, from the businesses.
but the total assets will be on rise. So the legacy which I will be giving to my children, to my any of the legacy people, that will be more in terms of finance also. Now this is because the capital appreciation process. As the value increases, your net worth increases. अगर आपके शेयर मार्केट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट जिस शेयर्स में किया है वो अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, in turn your assets are increasing, in turn your net worth is increasing, so your capital is appreciating, so your net worth is growing. Irrespective of the inflation, the assets, though they will be having the impact, yet when you are invested in diversified things, the median will be a growth. सो वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग, ये कब होगा? स्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्फ्लेशन हो गया, तो उसमें पार्ट हो गया, देन द शेयर मार्केट में फ्लक्चुएट, तो एसेट्स वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज. जब मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया है इन डिफरेंट बकेट्स, द मीडियन विल बी ग्रोथ, राइज इन एसेट्स, हेंस नेटवर्थ विल बी राइज, हेंस मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई. I am at comfort that I am having a financial stable. In other words, I have created the wealth. From my wealth foundation towards wealth mastery की जर्नी में मैंने पहले क्रिएट कर दिया, अब जनरेशन हो रहा है. नाउ आई हैव टू जनरेट मोर सो दैट आई बिकम financially stable person by creation of generation of income, by creation of wealth, generation of wealth. Now this will in turn, when I am financially secured, I am mentally very free. ज्यादा स्ट्रेस कब आता है? प्रॉब्लम आ गया, दिमाग है, पैसा नहीं है, ओ अब स्ट्रेस आ गया, बिकॉज एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी. So whether I have created my financial stability, whether I am moving towards the wealth creation, so yes, I am trying to improve on my total assets and hence my net worth, which will enhance my financial stability. अब अगर मैं बैंक के पास जाता हूँ, and bank even as I am giving an example because bankers are the people who take or give loans to the people against some security. Nowadays there are many without security also loans, but in general they require some security. Now that security is your financial stability, because the loan part depends on how financially secured you are. The loan part depends on what total assets you are having. The loan part depends on your net worth. Now this last sentence is related to the liabilities also. So I will not be stressing more on that net worth part now, because if the liabilities are more, then the loan will be less, because you are not financially sound. That will be taking account into in our third session from now. That is this, today's session is on total assets. Then tomorrow in next session, that is on Friday, I will be talking about the importance of total assets. The term total assets and why it is so important, well, for wealth creation. So today we are talking of total assets. So the investment opportunities, that is the we are investing in many of the stock market or many of the bonds or RBI bonds or wherever you are diversifying the investments. The opportunities that are created by your thought process, by your financial advisor, whatever may be. You are in the process of creating your financial stability so that the banker or you will be able to have a big cushion to bank on in any type of uncertainties. बैंक से लोन लेना है वो तो ठीक है, लेकिन वो तो लोन देने के लिए वो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, what you can offer as a security. That security is your total assets part. So that is your growth potential. आप अगर बढ़ रहे हो, creation of wealth is happening. That is the potential you are having of your growth. That is the credit worthiness you are having.
If you have created the wealth, generated the income, reduce the liabilities part, your credit worthiness grows. That is accounted in फाइनेंस, पैसा. इसीलिए मैंने कहा सर और मैडम लोग, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा जीने के लिए बहुत जरूरी है. वी हैव टू बी वेरी कॉशियस बट कॉन्फिडेंट while proceeding in terms of finance. While creating the wealth, it is a necessity that we understand what it means for you in your life. It is a credit worthiness for you, friends. The more credit worthy you are, the more status you have in the society, the more people will be able to bank on you, because they are not only banking on your credit worthiness, but they are also looking at different angles. But the basic part is your net worth. Security क्या है? That is what they are dealing with. So financial independence and legacy. जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, कब होगे? When you have created assets, when you are ready to have financial stability in the form of assets that are marketable sources, then you are ready to be more credit worthy in the financial market. So the assets should be clean and clear. सब लोन पे लिया, लोन पे दिया है, अरे तो उसकी वैल्यू तब तक नहीं जब तक लोन चालू है. So though you are rising your total assets, the value will be decreasing because of the loan part. ये मैंने अभी कहा, लाइबिलिटीज के पार्ट में मैं आऊंगा तभी इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. सो द एसेट एलोकेशन शुड ऑलवेज बी डाइवर्सिफाइड. ये क्या है, हम आमतौर पे पुरानी कई ऐसी फ्रेजेस है, उनमें से एक है डू नॉट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट. अलग अलग में डालो, डाइवर्सिफाई करो, जनरेट इनकम, पीरियोडिकल रिव्यू लो. अगर मैंने बोला, मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर ने बोला इस स्टॉक मार्केट में डाल दो, मैंने डाल दिया. पहले तो बहुत रिटर्न दे रहा था रे, बट लेटर ऑन इट स्टार्टेड गिविंग नो रिटर्न्स, द वैल्यू स्टार्टेड डिटोरेटिंग. अरे तो तुमने क्यों नहीं देखा? हाँ, टोटल एसेट जब जनरेट हो रहे थे तब मैंने जब डाल दिया, मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर ने बोला तो मैंने कर दिया, लेकिन मैंने इवैल्यूएट ही नहीं किया क्वार्टरली रेगुलर बेसिस पे. रिजल्ट फ्रॉड्स होते हैं ना. सर मैंने उसके बोलने पर पैसा डाल दिया, लेकिन अभी वो आदमी पैसा लेके भाग गया. अब हम लोग सारे पुलिस स्टेशन जा रहे हैं उसके अगेंस्ट. पैसा किधर है? वो तो भाग गया, वो तो गया, अभी क्या वो आएगा तभी आएगा. व्हाट इज दिस? You wouldn't evaluate on the regular interval basis. You didn't question that person. You didn't realize the importance of evaluating the person on regular basis. उसकी फर्म, उसकी इन्वेस्टमेंट, वो क्या कर रहा है, उसकी बैलेंस शीट क्या बोलती है, वो सब तुमने देखा ही नहीं. हमने विश्वास रखा. मेरे दोस्त ने बोला इसमें वो जो अच्छा पैसा रिटर्न देता है वो. First and foremost, friends, we have to understand how can a person give more interest in a period where none of the official or statutory people, they are not even thinking of giving that much of interest. जैसे अभी मैंने कहानी आपको बताइएगा, आदमी जो सीए था, लोगों से इन्वेस्टमेंट ले लिया, अभी वो भाग गया, and he has defrauded many people by some many crores. अब ये किया कैसे उसने? हमने सोचा ही नहीं ना वो 10% इंटरेस्ट कब कैसे दे रहा है, when not even a bank is giving you 10% nowadays. तो ये कैसे मैनेज कर रहा है? वो इन्वेस्ट कहां कर रहा है? इन्फ्लेशन यहां पे ग्रोथ हो रहा है. सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू बैलेंस आवर ओन डेली लाइफ, वी फील द हीट, येट ज्यादा पैसा मिल रहा है तो हमारी वो लालच हमारे दिमाग को ताला लगा देती है. वी डोंट इवन ट्राई टू थिंक ऑफ दोस थिंग्स एंड गेट डिफ्रॉडेड. तो पुलिस भी पहला सवाल यही पूछती है, तुमने कैसे उसमें पैसा डाल दिया? नहीं सर, मेरे दोस्त ने बोला था. अच्छा, तो उसने बोला तुमने डाल दिया? यू सी, दे आर द इंक्वायरी ऑफिसर्स. वो बेसिक सवाल पूछते हैं.
और वो सवाल चुभता है, because we didn't make ourselves aware of the financial terms, we didn't make ourselves aware of the necessity of understanding the investment part, we didn't take efforts of evaluating the person on regularly basis, hence we are facing such type of problems. ये वो डिफ्रॉडेड आदमी सोचता ही नहीं है। वो सभी पे मैंने देखा यूट्यूब में भी और पेपर में पढ़ा कि लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, बता रहे हैं, मेनी ऑफ द सीनियर मेनी नोन पीपल इन द सोसाइटी दे वर इंटरव्यू, नहीं मेरे दोस्त ने बोला था 10 साल तो वो अच्छा इंटरेस्ट दे रहा था इसलिए मैंने पूछा नहीं। बाबा 2% या 4% इंटरेस्ट के लिए तो अपनी पूरी जमा पूंजी उसके ऊपर खर्चा कर रहा है। नाउ यू डोंट हैव एनी क्लू पैसा वापस कैसे आने वाला है, बिकॉज एज इट इज सेड ही डिडंट इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट और एनीथिंग, तो आपके पास कोई एसेट है ही नहीं, क्रेडिट वर्दी नहीं रहा। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, बाबा मत डालो पैसा उसमें, नहीं करना है हमको, हार्ड अर्न मनी है यार, ऐसे किसी के कहने पे किसी के पास रख थोड़ी ना रख दूंगा। इंटरेस्ट आना चाहिए, सही है, लीगली होना चाहिए, ये परफेक्ट है। हमको वो देखना पड़ेगा, हाउ वी हैव टू इवैल्यूएट, एनालाइज, थिंक प्रोसेस, and that is what we are trying to do it here now, friends. We are trying to have our base very sound so that we understand every financial term before making an investment, which we'll be doing in the later series of this, in the later episodes of this series. So you are, in a way, you should be able to manage your risk. बाबा पैसा कमाया आपने, तो मैंने अभी किसी के बोलने पे उसको पैसा दे दिया, वो आदमी भाग गया, अरे बाप रे ये तो डेंजरस हो गया। कई ऐसे फ्रॉड हो गए ना। नाउ द गवर्नमेंट एंड द एजेंसीज दे आर कमिंग वर्क विद मेनी स्ट्रॉन्ग लॉज, येट देयर आर पीपल हु गेट ल्यूर्ड बाय दिस टाइप ऑफ डिफ्रॉडर्स, है ना। इतने लॉज है, इतने लोग सतर्क करते हैं, इतनी तो आजकल तो टीवी पे भी एडवर्टाइजमेंट आती है, जानकार बने, सतर्क रहे, है ना। तो जानकार बने, ये करेक्ट है, सतर्क रहे, ये भी करेक्ट है। डोंट गेट डिफ्रॉडेड बाय एनीथिंग फ्रेंड्स, नो 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 नो। पैसा कमाया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा, फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, लेकिन पैसा आपका है तो आपको अवेयरनेस होना ही चाहिए। सो यू आर इन अ वे मिटिगेटिंग योर रिस्क, अपनी रिस्क कम कर रहे हो जब आप जानकार बन रहे हो तो। That is what we are up to, friends. The total assets, though it is a credit worthiness part, how to generate that, you have to understand that. The term total assets encompasses many angles. अभी मैंने एक उसमें से कहा था कि शेयर मार्केट में डाला, वोलाटाइल, अप डाउन्स होते ही रहते हैं, whether we have evaluated that part. आपने पूछा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को, भाई इसमें क्यों नहीं, यू शुड आस्क। दैट इज व्हाट वी आर अप टू फ्रेंड्स, सो दैट व्हेन वी आर अवेयर, इन अ वे वी आर मैक्सिमाइजिंग आवर रिटर्न्स। रिस्क कम करके हमारे रिटर्न्स जो आ रहे हैं, पक्के आ रहे हैं। दैट इज व्हाट वी शुड डू, बिकॉज इन अ वे बाय दिस वी आर जनरेटिंग आवर फाइनेंशियल एसेट्स, टोटल एसेट्स। पक्का आ रहा है, ठीक है, अब एसेट बढ़ रहे हैं मेरे, ओके, नहीं पक्का आ रहा है कि मालूम नहीं है, वो आदमी जब करेगा तो उसने कुछ बताया नहीं कहाँ मेरा पैसा डाला। व्हाट इज दिस? रिस्क, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ बेसिक टर्म नॉलेज। एसेट्स बढ़ाने हैं कि नहीं बढ़ाने हैं, वो सोचा ही नहीं था। मेरे पास पैसा आ गया, मैंने सोचा अरे मैं अभी रिटायर हो गया, पैसा आ गया, तो मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट ने बोला इसमें डाल दो, मैंने डाल दिया। Oh, now you are not aware whether that is pakka, whether that is sure, that is going to give you returns, that is helping you to generate assets. That is what your goal should be. So friends, please understand, total assets play the vital role in the wealth creation, provided you generate assets, you generate income. I have tried to
I've tried to include in this episode what are total assets, how it is affecting your credit worthiness, how it is affecting your net worth. And I will be summing up the importance of total assets in wealth creation in our next session, that is on Friday. Till then, bye bye. I'm signing off now, friends, on this note. Till then, bye bye, friends. We meet again in another episode of the Midas Touch Wealth Foundation to Wealth Foundation to Wealth Mastery series journey with Vikas Joshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.